audible. देखिए तो right. So everybody, good morning. Okay, Aryaman, Yes, you sir. have to introduce, right? Yes. So Good proceed. morning, respected sir, and everyone present in the session. I, Aryaman Gehlot, welcome you all on behalf of Diya Delhi in our today's ethics session by our respected Abhimanyu, sir. So let's begin the session with a positive cure. Knowledge is about acquiring information, but wisdom is about understanding and applying the information in meaningful ways. True wisdom often involves listening, observing, and reflecting. By taking these three things into consideration, we open ourselves to new perspectives and deeper insights, which can lead to more thoughtful decisions and actions. Thank you, and now over to you, sir. Right. Thank you, Aryaman, and good morning again, everyone. Uh, I am Abhimanyu Shridhar, the Faculty of Ethics, Integrity and Aptitude. Welcome you at the Sambhavam IAS. And today's session is actually about one concept, multiple dimensions, and numerous questions, right? And at the same time, we'll try to establish an understanding, especially to those students who have just joined this session for their first day. And as I always say that ethics, integrity, and aptitude is not a traditional subject. So I have to repeat some points that I have already discussed in previous sessions, right? So I have been asked to just keep this session bilingual, right? I have been asked to keep this session bilingual. So everybody's okay. Only for today's session, this class, if we are keeping this session bilingual, so does anybody have any problem? No problem. Okay, fine. So we'll try to keep it bilingual. So as I've said so far in my previous lectures, that ethics, integrity, and aptitude is a multidimensional subject. Is a multidimensional subject. So जब हम बात करते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में, यह एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, राइट? इसका मतलब यह है कि हमने इस पर ना तो स्कूल में पढ़ाई की है, ना कॉलेज में पढ़ाई की है, ना ही हमने इसे कोई देयर इज एनी कोर्स अवेलेबल फॉर डूइंग मास्टर्स और ग्रेजुएशन, राइट? सो अल्टीमेटली दिस इज अ कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट्स preparing for civil service examination. So if we start taking this subject like other subjects, we can reach nowhere. We can reach nowhere. क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में, अगर हिंदी में इसको हम कहें तो पारंपरिक विषयों के बारे में, देन ऑल द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, बी इट मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वट एवर वी लर्न इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन आर एकेडमिक्स, वो सब के सब फैक्ट्स एंड डेटा पर बेस्ड होते हैं, राइट? एंड वी कैन हैव a little changes. We can have only some changes when we have to answer our questions. But we cannot doctor with the facts, information, and I would say that data. When we talk about ethics, integrity, and aptitude, it is completely a non-traditional subject, which means it is not based on data, information, facts, information. And that is why it is a multi-dimensional subject. यह जो subject है वह एक multi-dimensional subject है. तो अगर किसी को लगता है, if somebody feels कि we should have some particular book available in the market written by somebody whosoever, चाहे उसे किसी ने लिखा हो, किसी भी ने लिखा हो, उस किताब को लेके मैं पढ़ूं और अच्छा स्कोर करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. बल्कि हो सकता है बुक्स पढ़ने का कुछ एडवर्स इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाए, राइट? Yeah, Snehasi says Hindi language is more complicated. Actually, I have been asked to keep this session, only this session, the class number 13, bilingual. That is why I'm just trying to maintain bilingual approach. Okay. So I was talking about ethics, integrity, and aptitude. It is completely, it is completely a non-traditional subject. So we cannot have only one answer.
It is multidimensional in its approach. It is multidimensional in its approach. So whenever you feel, whenever you feel that you just have to score maximum mark in this subject, in this subject, then you just have to have some aboriginal approach on your part, right? And this is the core idea. This is the core idea. This is the core idea that we have to keep while answering the questions or studying this subject, this paper. Clear? So, as I said in the first lecture, that people, most of the philosophers across the world, they have copied ethics, morality, and such kind of philosophies from our scriptures, from our Vedas, from our Vedas, from our, I would say that scriptures like Ramayana, Mahabharat, right? And they have copied from us, right? And unfortunately, the mentors of our country, the educators of our country are copying those concepts from their books, from their books. And that is why we are not able to understand this paper so proficiently as it is required to score maximum marks. तो हम बात करते हैं जैसा मैंने कहा कि some people may have some problem, but I have basically requested to keep this session bilingual. That is why I'm trying to use it. I'm trying to use both the languages at the same time, right? So now today's food for thought is corruption. Today we are going to discuss about one issue, that is corruption, and we'll have a look on all the questions so far asked in the civil service examination. So what I have said, this ethics paper, the fourth paper of ethics is the fourth paper of GS. The fourth paper of GS is about, it's a multi-dimensional subject, right? And that is why we are supposed to have conceptual clarity, right? So that we can know different dimensions, different aspects to answer numerous questions, right? To answer numerous questions. So fourth paper of general studies, ethics, integrity, and aptitude is a multidimensional subject. In this paper, you need to have conceptual clarity so that you can understand different concepts to answer numerous questions. So today's concept is corruption, right? If I'm asking you, you know about corruption? If I'm asking you, you know about corruption? So you can find nobody around you, anywhere, people of any walk of life. Everybody says, yes, I know about corruption. Be it a rickshaw puller, or a shopkeeper, or a driver, or a professor, or a student, or a housewife, or a politician, or a bureaucrat, everybody knows about corruption. This is such a, I would say, such a common topic, common concept that everybody knows about it. And if you ask somebody, just tell something about corruption, he has different kind of aspects. He will tell you different stories. He will have different kind of names. अगर आप किसी से पूछें कि करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बताइए, वो उसके पास आपको बताने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत सारे, आई वुड से बहुत सारे अलग अलग तरह के परिभाषाएं, डेफिनेशंस होंगी. सो इट्स अ वेरी यूजुअल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट. एंड if you go through the newspaper published in 50s, you will also find the issue of corruption one of the biggest issue, one of the burning issues of that time. तो बहुत सारी, आज से 50 साल पुरानी
न्यूज़पेपर के अंदर भी जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है? करप्शन. टुडे वी टॉक अबाउट करप्शन. इट हैज बीन नो टाइम व्हेन पीपल वर नॉट टॉकिंग अबाउट करप्शन. ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों ने करप्शन के बारे में बात नहीं की, राइट? सो इतना कॉमन ये टॉपिक है. दिस इज सच अ वेरी कॉमन टॉपिक दैट एवरीबडी फील्स comfortable to answer, right? But you are the civil service aspirants and you are supposed to answer the questions the way it can score maximum marks for you. And as I've told you, जैसा मैंने आपसे कई बार कहा, it is the only paper, the fourth paper of GS, in which you can dream of scoring 200 and above 200. Otherwise, it's not possible. It is not possible to score more than 200 or even 200, right? In GS 1, 2, 3 and optionals. Clear? So I am telling you, and if you can score maximum marks in this paper, you can also score the highest mark in the first paper of essay of mains. So I was telling that corruption is one of the issues, one of such issues which is very common to everyone. हर किसी को यह टॉपिक ऐसा लगता है मानो कि वो इसके बारे में जानता है. मेरे घर में एक मेड काम करने के लिए आती है एंड एवरी डे शी हैज सम स्टोरीज अबाउट करप्ट पर्संस, राइट? एंड वॉट एवर शी इज सेइंग इज वेरी लॉजिकल, राइट? when you happen to talk with when you happen to talk with some people, those are street vendors, or I would say that rickshaw pullers, they will also have some stories about corruption. So corruption is known to everyone. Everybody is suffering. It seems that everybody is the victim of corruption somehow, somewhere, by somebody or by something. लेकिन इसके बाद भी जब आंसर देने की बात आती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो स्कोर कैसे हो अच्छा? हाउ टू हैव मोर स्कोर्स, राइट? It's a very hard nut to crack. So now I'm going to start the session with the topic of corruption, and I will decode all the aspects of corruption, all the aspects, and that I am sure, I claim, सिर्फ उसी को पता है ये सारे aspects. Those students have taken classes from me. It doesn't matter, it doesn't mean people don't know about this. Some people, some philosophers, some social reformists, and the people of different walk of life, they have some idea about that. But as I said, when it is officially comes to answering the questions in GS fourth paper, it becomes a hard nut to crack. So let's start. See. So we are starting with today's food for thought. The issue is corruption. The issue is corruption. See, questions from previous years. Questions from previous years. So first have a look on the questions asked in the previous year, and then after we'll discuss about the issue of corruption. See, in 2014, the question was, it is often said that poverty leads to corruption. However, there are no dearth of instances where affluent and powerful people indulge in corruption in a big way. What are the basic causes of corruption among people? Support your answer with examples. In 2015, the question was asked. Today, we find that in spite of various measures of prescribing codes of conduct, setting up vigilance cells, commissions, RTI, active media, and strengthening of global mechanism, corrupt practices are not coming under control. A. Evaluate the effectiveness of these measures with justifications. B. Suggest more effective strategies to tackle this menace. In 2019, the question was on corruption.
Non-performance of duty by a public servant is a form of corruption. Do you agree with this view? Justify your answer. Many a time I have just discussed, बहुत बार मैंने डिस्कस किया है कि if an organization is afflicted with non-performance, means number of persons are working in an organization और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, because every organization has been set up to bring some results, to bring some results. So if the organization is not producing results for the purpose it was established, it was set up, then what is the use of having such kind of public organizations? Because ultimately it will be, I would say, the waste of public money. उनको salary pay करना है, right? They have basically designated to a certain position, right? So Sara, what is the use of such kind of departments? And as we have already discussed, that non-performance is an example of lack of integrity. Non-performance is an example of lack of integrity. And I have also told you, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि integrity and probity सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर उसका रिलेशन करप्शन के साथ है, राइट? करप्शन के साथ मतलब when we talk about integrity and probity in governance or probity in public life, we always mean to remove corruption by having these two values. Okay. So it was a question in 2019. Now question number 4. An independent and empowered social audit mechanism is an absolute must in every sphere of public service, including judiciary, to ensure performance, accountability, and ethical conduct. Elaborate. In question number 5, in 2020, what do you understand by the term public servant? Reflect on the expected roles and duties of a public servant in the context of ensuring transparency, accountability, and ethical governance in India. Number 6, in 2019, what do you understand by probity in governance? Examine the reasons for the absence of probity in India's public life. Suggest measures for ensuring probity in governance. Now see, question number 5 and 6. In both the questions, we have not had the word corruption, namely, right? But as I said, I always tell you, I always advise you, if you want to have an expertise in civil service examination, not only in the fourth paper of GS, but also GS 1, 2, 3 and the optionals, you must be able to understand two things. No sooner do you see the questions. जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, आपको दो बातें मालूम चलना चाहिए. First, the first thing, what is the trap in this question? And then, what is the purpose of this question? Because if UPSC is asking a question about something or anything, there must be some purpose. Ultimately, UPSC is not going to find some grooms and brides. Are they? They are not going for that. They are going to select some bureaucrats, some administrators who can execute the policies made by the government, right? In the interest of public, the biggest stakeholder of democracy and a democratic system. तो अगर क्वेश्चन पूछा गया किसी भी तरह का, आपको दो बातें मालूम चलना चाहिए जैसे ही आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं. पहला, इसमें ट्रैप क्या है? सेकंड, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? Once you understand the trap, you must know the purpose, right? तो जब क्वेश्चन था, the question is about probity, question is about transparency and accountability, it means it is ultimately targeting the issue of corruption. You must know. So your way of answering must be in orientation with, or I would say in sync with, the purpose of the question, right? And I always say, preachings will not mend your matters. Preachings will not solve your matters. Preachings will not help you realize your dreams.
to become an IAS. It is the practice of those preachings that will certainly help you succeed in this exam, right? तो प्रवचन से कल्याण नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है? एंड दैट इज वाई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरी क्लास के अंदर दिस इज द फाउंडेशन बैच, राइट? Since today we have some students, those have cleared prelims, but this is actually the batch of prelims for the foundation students preparing for foundation, right? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि so from the very first day I have given you model answers, 2 model answers every day, and some model questions framed by me on a particular topic. So we have to do that. We have to do that. We have to be practical. We have to have the practical approach. So these 2 questions, question number 5 and 6, they have not even a single place where corruption, the word corruption has been used. एक भी जगह corruption शब्द का use नहीं किया गया है, but this is about corruption that you must know. Every civil servant must know. Now, number 7, in 2015, the question was, today we find that in spite of various measures and deterrents, bribery is not coming under control. Yes, very good question. Bribery is not coming under control. Examine why. Suggest measures to tackle the menace. Let me read this question also. In 2023, corruption is the manifestation of the failure of core values in the society. In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values in the society? Now, when we talk about corruption, जैसा मैंने आपसे कहा, everybody has some or more idea about corruption. मतलब corruption वो उस तरह का issue है हमारे देश में और कहीं भी. We talk about our country, that everybody knows something about it, more or less, and everybody has some advice. आप किसी से पूछिए what is the solution of corruption, everybody has something to say. ऐसा लगता है कि they are boiling over thoughts. They are boiling over with thoughts. They have different kind of thoughts, right? तो करप्शन एक वेरी कॉमन टॉपिक है. करप्शन एक बहुत ही let me read some comments. Sir, how to Pankaj Singh is asking, sir, how to differentiate, evaluate, comment, etc. These types of words in the question we'll discuss about. You're talking about some words are basically used like evaluate, analyze, critically analyze, elucidate. Yes, you are asking the same. You are asking the same. आप वही पूछ रहे हैं ना? Yes, we'll discuss about that. This when I'll talk about some strategies. Meanwhile, we have a lot of things to discuss about corruption. First of all, we are completing this. फिर उन सब क्वेश्चंस का भी आंसर आपको देंगे. एक सेशन होगा, मैंने अनाउंस किया हुआ है. इन दोज क्वेश्चंस आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज. इनका क्वेश्चन क्या है जानते हो आप लोग? पंकज सिंह का क्वेश्चन क्या है? एवरीबडी, उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस में लिखा होता है कई बार इवेल्युएट, कई बार लिखा होता है एनालाइज, कई बार लिखा होता पूछता है क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज, कई बार होता है क्रिटिकली एग्जामिन, कई बार लिखा होता है एलुसिडेट, राइट? सो we'll discuss about what do those words actually mean and what we have to do. We'll certainly do a session for that. तो मैंने कहा कि करप्शन के बारे में हर कोई जानता है, गवर्नमेंट एजेंसीज जानती हैं. We have had a lot of measures, we have had a lot of, I would say that system around us. कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, बहुत सारी हमारे लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज हैं, CAG, CVC, CBI, ED, फिर भी करप्शन खत्म नहीं हुआ, राइट? आइदर दिस वे और दैट वे, करप्शन इज स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोबडी कैन क्लेम, कोई नहीं कह सकता कि करप्शन कभी खत्म होगा या नहीं होगा, राइट? क्लियर? सो व्हाई इट हैपेंस? सो लेट्स हैव one more look on the some model questions framed by me. Then I'll talk about different aspects of corruption, different types of corruption. What is the reason that corruption is not eliminated? Corruption has not yet been eliminated. वो हम सारी बात करने वाले हैं, ठीक है? आगे देखिए. So model questions on corruption. The first question is, what are the social dimensions of corruption? Suggest necessary measures to overcome it. Number 2. Despite having been taken a number of measures to curb corruption,
It is still a big challenge. Describe the reason behind it and also suggest substantial solutions. Now, question number 3. What is the role of ethics in abolishing corruption? Number 4. Corruption destroys the moral fabric of society and erodes the faith of the common man in the legitimacy of the politico administrative setup. What are the reasons behind corruption in India? Also discuss the reform measures to eliminate corruption. Number 5. What are the types of corruption and the role of society to overcome it? Number 6. Corruption is a multifaceted problem and requires a comprehensive strategy to overcome it. Discuss the ways in which corruption can be eliminated. Right? Now, number 7. Corruption has a multidimensional impact on organizations, individuals, and communities. Analyze it with solutions on ethical parameters. Number 8. What is corruption and its root cause? Why it has become a guardian knot for the government to overcome it? Number 9. Corruption is the manifestation of the failure of core values. This is a question from 2013. It's been repeated. Right. Now, before going for the brainstorming on the question of corruption asked in 2023, that is, corruption is the manifestation of the failure of core values in the society. In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values in the society? So now we talk about corruption, right? We talk about corruption. So what is the corruption, right? So I talk about there are two categories of corruption. Corruption. We define corruption. Corruption. It is of two types. The first and the second. The first corruption this is, I would say, need corruption. Need corruption. First, I give you a list, then we'll discuss one by one. Need corruption, passive corruption, and I would say indirect corruption. Indirect corruption. Just listen to me carefully. You will understand each and every aspect of corruption so far, and you will also come to know how can corruption be eliminated from our society, right? Okay. The second type of corruption are the corruption. These are greed corruption, greed corruption, active corruption, active corruption, and I would say direct corruption. Direct corruption. So we have two categories of corruption. We have two categories of corruption. In the first category, we have need corruption, passive corruption, and indirect corruption. In the second category, we have greed corruption, active corruption, and direct corruption. Right? So there are actually seven types of corruption. The number 7 I will discuss in the last. Once you understand these 6 type of corruption. These 6 type of corruption. Now, first I discuss before delving into the deep of these concepts. बहुत अंदर जाने से पहले मैं आपको बहुत ऐसी बात बताने वाला हूं which are of the utmost importance. What? Let's see. Category type 1 corruption. Type first of corruption and type 2 of corruption. Second type
we have in our society, we have in our society solution, measures for in our country, in our country, all the agencies and the organizations, they are trying to, they are trying to eliminate, they are trying to eliminate only, they are trying to eliminate only the type second corruption, which are evident. Type 2 corruption, what are the corruption? What are type 2? Active corruption, एक्टिव करप्शन, ग्रीड करप्शन एंड डायरेक्ट करप्शन. हमारे पास जो भी, हर कोई, जैसा मैंने आपसे कहा शुरू में, कई बार कहा बीच में भी, कि हर किसी को करप्शन के बारे में कुछ ना कुछ पता है. एवरीबडी हैज सम कंप्लेंट्स, एवरीबडी हैज सम एग्जांपल्स, पीपल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इन आवर कंट्री, हमारे देश में लोगों को करप्शन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है. हर किसी के पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी है, हर किसी के पास. मैंने कहा ना, सबसे जो एक जो स्वीपर्स हैं, दे आर बेसिकली स्वीपिंग द रोड्स, क्लीनिंग द रोड्स. द रिक्शा पुलर्स, दे आल्सो हैव सम आइडियाज, दे आल्सो हैव सम एग्जांपल्स, दे कैन टेल यू सम नेम्स. वो बता सकते हैं ये करप्ट है, ये होना चाहिए. सबके पास सोल्यूशन है. मगर हर कोई, अच्छा, सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है, राइट. देयर आर सम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्शन. वो किसके बारे में है? इसके बारे में. वी डोंट हैव एंड वी नेवर टॉक अबाउट टाइप 1 करप्शन. वी नेवर टॉक अबाउट टाइप 1 करप्शन. हम कभी भी टाइप 1 करप्शन, टाइप 1 करप्शन क्या है भाई? टाइप 1 करप्शन है, दैट इज नीड करप्शन, पैसिव करप्शन, इनडायरेक्ट करप्शन. और एक और है, एक और है जो मैं आपसे इन द लास्ट वंस आई एक्सप्लेन ऑल दीज, एक बार मैं सबको समझा दूं, मैं सबको समझा दूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा. फिर मैं आपको नंबर 7 करप्शन भी बताऊंगा. प्राइमरली वैसे तो 9 तरह के करप्शन जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, जो मैंने एक्सप्लोर किया है, 9 तरह के करप्शन हैं. बट बीइंग द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, you must know maximum 7 types of corruption, right? So ये जो करप्शन है, ये जो करप्शन है बेसिकली, इसका, इसके बारे में लोग सोचते नहीं. neither the government nor, I would say, nor I would judiciary, nor any organization. Reason, what is the reason? They are actually deep rooted in our society. Those corruptions are deep rooted in our society, deep rooted, right? And डीप रूटेड है वो तो ठीक है, बट उसका सोल्यूशन कैसे निकले, राइट? इट्स अ माइंड बॉगलिंग इशू. इट्स लाइक समथिंग टू बी फाइंड फ्रॉम द पेंडोराज बॉक्स, कि मतलब बहुत सारी चीजें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं, उसमें से आपको एक काम की चीज ढूंढनी है, राइट? तो पहले इसको रिकग्नाइज करना ही मुश्किल है. इट्स वेरी टफ टू रिकग्नाइज दीज करप्शन. जब रिकग्नाइज होती हैं तो ये समझ नहीं आता कि हाउ टू एलिमिनेट सच काइंड ऑफ करप्शन. सो दे आर डीप रूटेड करप्शन इन आवर फैमिलीज, इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, राइट? और हम जो जिनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सम इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, they are also indulged in such corruption. They are also cause of such kind of corruptions, directly or indirectly. So the first type of corruption, need corruption, passive corruption, indirect corruption, we do not have, we do not have any solution. We don't have certain measures to eliminate the corruption of type 1. The corruption of type 1, we don't have solutions. We don't have solution to eliminate type 1 corruption. We have different kind of law enforcement bodies,
like CAG, CBC, I would say that ED, CBI, RTI, right? Ombudsman, Lokpal, Lokayuks. So we have some certain systems to eliminate eliminate type 2 corruption. Type 2 corruption. So let's discuss about every corruption one by one. We are discussing all corruption one by one. Then we'll talk about the solution. So what is the general definition of corruption? See, it's also very interesting. When UPSC is asking about some particular issues, then we actually want to give the same definition as is mentioned somewhere by somebody in some particular book. I'm not saying those answers cannot be considered. Those definitions cannot be considered. But don't try to be stuck with such kind of definitions. तो करप्शन की एक जो सबसे एक बैलेंस्ड डेफिनेशन है वो क्या है? करप्शन. What is corruption? What is corruption? So you can pen down. You can pen down. You can pen down also. The abuse of abuse of abuse of entrusted power and authority. The abuse of entrusted power and authority. Abused of entrusted power and authority for one's vested interest. So this is the most common and I would say clear definition of corruption. What is the corruption? The abuse, sorry, not abused, the abuse of entrusted power and authority for one's vested interest. This is called corruption. This is called corruption. Right? This is called corruption. So now we are discussing corruption. So how many types of corruption I have told you? There are two categories. In each category, we have three corruption, 3 and 3, 6 corruption, right? And the number 7 corruption we'll discuss later. Okay, so we are starting with, first of all, we talk about direct corruption. First of all, we talk about direct corruption. First of all, we talk about direct corruption. Direct corruption. What is direct corruption? Direct corruptions are the corruptions that are an offense that has been declared, that has been considered, that has been considered the crime, the offense, right? What are these? These are, I would say, extortion, cheating, embezzlement, stealing, thievery, bribery, these are, and we can also add some like forgery. We can also add some forgery, treachery, etc. Right? So these are direct corruption
which has been declared, which has been declared the corruption as an offense. And we have certain law enforcement bodies to stop these corruption, right? We have certain law enforcement bodies to stop these corruption, extortion, cheating, embezzlement, stealing, thievery, bribery, forgery, right? So for these corruption, we have certain arrangements. We have certain we have certain law enforcement bodies. Those are trying to ensure corruption free society by eliminating these acts, by eliminating these activities from our society, from wheresoever it happens. So this is direct corruption. What is indirect corruption? What is indirect corruption? Indirect corruption. Indirect corruptions are actually the corruptions that exist in our society but cannot be easily found, cannot be easily, I would say that, जिसको आसानी से हम पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं व्हाइट कॉलर करप्शन, राइट? बाहर से देखने में बिल्कुल साफ सुथरे, फिर भी करप्शन में डूबे हुए लोग. समटाइम्स 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 वी कम टू नो दैट दिस मिनिस्टर और दिस ऑफिसर इज वेरी ऑनेस्ट. आप सुनने को आता है ना बहुत सारा, ये बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, राइट? बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं. फिर मालूम चलता है कुछ सालों के बाद दैट ही वॉज इंडल्ज इन करप्शन. ही वॉज इंडल्ज इन करप्शन. हाउ? जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जब रेड मारती है, राइट, when they raid the house of such kind of persons or the assets of such kind of persons, then they explore that this officer has earned more than 1000 crore, 10,000 crore rupees has been seized from the house of this minister or this officer or this administrator. But in the history of his, I would say that, journey as a minister or as a bureaucrat, कहीं पर भी उसके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं होते हैं. He doesn't have any corruption charge on him or on her. But इतना पैसा कहाँ से आया? ये ब्लैक मनी इतना कहाँ से आया? इसका मतलब है, इसका मतलब है, देर आर सम सोर्सेज विच आर नॉट एविडेंट. See, keeping fund of Manrega, somebody is asking, Sana Faruqi saying she was keeping somebody's name, fund of Manrega. ये तो आप पकड़ सकते हो, ट्रेस कर सकते हो. These corruptions can be traced once it is exposed, once it comes to notice. But उसके, लेकिन आप ऐसे लोगों का नाम सुनते हैं ना, they have been very honest. They have been an ideal figure in society for thousands, for the people, wheresoever they worked. ऐसे लोगों के पास जब crores of crores पैसा निकलता है, ब्लैक मनी, राइट, तो इस करप्शन को आप क्या कहोगे? दैट्स नॉट एविडेंट, दैट्स नॉट ओपन, दैट्स नॉट क्लियर. इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट करप्शन. ये है क्या? क्या ये होता कैसे है? या somebody is given the name of धीरज साहू. We can officially take the name because it's open now. वहां से more than 300 crores पकड़ा गया था. पता नहीं कैसे करप्शन किया. If police wants to explore कि भाई इतना पैसा आपके पास आया, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो एक्सप्लोर करेंगी कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया. तो they are not able to find a particular policy or particular fund that they have basically, I would say that, did corruption in. उन्होंने corruption किया, फिर भी उनके पास पैसा है, ब्लैक मनी, तो करप्शन का पार्ट हो गया.
लेकिन किया कैसे, पैसा आया कहाँ से, इट्स नॉट एविडेंट। और ऐसे कितने लोग पकड़ में आते हैं? हाउ मेनी पर्सन ऑफ इट्स काइंड आर एक्चुअली कॉट? 1 or 2 in thousands. 1 or 2 in thousands. And this is the corruption that's not been eliminated so far. That's very hard to eliminate. That's very tough to be eliminated because हमको पता नहीं, these are not evident. मालूम चलेगा ही नहीं करप्शन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। चुपचाप करप्शन हो रहा है, राइट। लाइक आपने देखा होगा इन समवेयर इन उत्तर प्रदेश देयर वाज अ बिजनेसमैन, उसके घर से इतना सारा पैसा निकला, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। वो कहाँ से आया, किसका पैसा है, और किसका पैसा है, उसने कैसे करप्शन किया? दैट्स नॉट क्लियर, दैट्स नॉट क्लियर। सो दीज आर indirect corruption. These are indirect corruption. Somebody has asked about the case of Vijay Malia's case is evident. विजय माल्या का जो केस है वो तो पकड़ में आ गया। आपने पैसा लिया बैंक से, आपने उसको पैसा नहीं चुकाया, तो आप कल्प्रिट हैं, यू आर द अक्यूज्ड। बट आई एम टेलिंग यू, आपने सुना होगा बहुत सारे मिनिस्टर्स को कि आपने कहा होगा ये सरकार बहुत ईमानदार है, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और when you happen to know that the ministers of this government or any particular government, कोई गवर्नमेंट है मान लीजिए या रही है, उसमें कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो पैसा कमाए जा रहे हैं, उन पे कोई करप्शन चार्ज नहीं है, दे आर वेरी मच पॉपुलर इन देयर पर्टिकुलर एरिया, लेकिन 5 साल पहले उनकी प्रॉपर्टी कुछ लाख की थी और 5 साल बाद उनकी उनकी प्रॉपर्टी कुछ 100 करोड़ हो गई। हाउ? कुछ तो गड़बड़ी हुई है ना। सो दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट करप्शन, दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट करप्शन। उसमें क्या क्या आता है देखिए, समझते हैं। वी कैन हैव सम नेम्स: नेपोटिज्म, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, इन्फ्लुएंस पेडलिंग। इस पे बहुत सारे मैनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सो फार बाय द यूपीएससी। इन्फ्लुएंस पेडलिंग, नेपोटिज्म हो गया, इन्फ्लुएंस पेडलिंग हो गया। सपोज करो फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन ए, देयर इज अ पर्सन ए, उसके पास कुछ लोग आए who are the aspirant of who are the aspirant of some police exams, state police exams, right? They have to become constables or head constables, they are preparing for that, या फिर उनको किसी पर्टिकुलर सर्विस में भर्ती होना है, राइट, under different kind of examination, state run by held by state governments. सो वो आपके पास आते हैं एंड आप यू एक ऑफिसर के पास आते हैं, से दे से, या एक मिनिस्टर के पास आते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज योर इन्फ्लुएंस, यू सिंपली हैव टू you simply have to use your influence, right, in my favor. So this is corruption. This is corruption because you are certainly depriving, if you are favoring somebody, if you are favoring somebody for a particular position, for a particular position to be acquired, then आप किसी न किसी को डिप्राइव कर रहे हैं, यानी जो डिजर्व करता है उसको आपने क्या किया, डिप्राइव कर दिया। मतलब वो उस काम को, उस पोजीशन को नहीं ले पाया, बिकॉज people some people who had some influence of some politicians, ministers or bureaucrats, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस का यूज किया, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस का यूज किया और उसका यूज करके उसको नौकरी दिलाई, तो जो डिजर्व करता था उसको नौकरी नहीं मिली। और क्या हो सकता है? अब्यूज ऑफ डिस्क्रेशन, अब्यूज ऑफ डिस्क्रेशन, abuse of discretion. Discretion I have just discussed in this class. Discretion का मतलब है कि there are something where only you have to decide, only you have to decide, you have to take the action,
और आपने उसका यूज किया, यू हैव मिसयूज्ड, you have actually misused. Some people are basically taking the name of some political persons. So yeah, I'm not. We should not discuss these things ultimately because this is actually the class for the civil servants. Getting, and why by using such names, we are not going to have any benefit, right? So try to avoid the names of politicians. Getting, you can talk about some. You can talk about some corruption, which has been quite famous and officially known to everyone, not in the talks of people. Okay. Again, somebody has talked about some the name of some god man. So we cannot mention in the answer writing such names. And if you are not able to write such names in your answer writing, then why should I illustrate such names? And that is why I'm not using such kind of names of politicians or I would say that some godmans and such people. So this abuse of discretion and favoritism. Next is favoritism. Then nexus, nexus or collusion, nexus between bureaucrats and business houses, nexus between politicians and businessmen, nexus between some, I would say, some mafias and bureaucrats. It's been evident. It's been evident. These are secret things. These are indirect. These are type of these are the cause of indirect corruption. ये सारे क्या है? ये indirect corruption के examples हैं. Clear? Nepotism, influence peddling, abuse of discretion, favoritism, nexus और collusion. अब हम जो बात करने वाले, so I have discussed two from each category. Category 1, category 2. One, corruption, active corruption, direct corruption, and second, indirect corruption. Collusion means nexus. स्नेहा गर्ग ने पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ collusion. Collusion का मतलब हो गया nexus, right? Okay, now next, the corruption number 3, greed corruption. First of all, we talk about need corruption, then greed corruption. Need corruption. This is very much acceptable in our society and is very dangerous. This is very much acceptable in our society and is very dangerous. ये हमारे सोसाइटी के अंदर बिल्कुल जड़ में बैठा हुआ है. ये करप्शन जो है ये है क्या? इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? और व्हाट आई से, जब आप आंसर लिखते हो, ऑलवेज ट्राई टू हाईलाइट such things which can impress, or I would say leave a great impression on the UPSC, because this is the only paper, the fourth paper of GS, in which you can go any far, you can go to any limit while answering your question. You can create dimensions. जो ट्रेडिशनल पेपर्स होते हैं GS 1 2 3 और ऑप्शनल्स, उसमें आप डायमेंशंस ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट क्रिएट मोर डायमेंशंस because those subjects are mostly static, and where they are dynamic, और जहां वो डायनेमिक होते भी है उसका रिलेशन उनके स्टैटिक पार्ट से होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें, सो जो करंट के इश्यूज हैं वो डायनेमिक है, बट दे आर समहाउ related to the static portion of Indian economy. In the same manner, political science. तो PSIR की आप बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें या पॉलिटिकल साइंस की बात करें, बहुत सारे इश्यूज करंट में होते हैं, बट उनका रिलेशन कहीं ना कहीं पास्ट से भी होता है. सो दे आर समहाउ स्टैटिक एंड डायनेमिक with relation in with reference to their static portion. But this topic, I'm telling you, this subject is completely dynamic, multidimensional. That is, and मैंने कई बार कहा कि in ethics we have all papers, and in all papers we have ethics. तो जब आपका एक्सपर्टीज एथिक्स के अंदर होगा, so while answering the question of
इंटरनेशनल रिलेशंस, आप थोड़ा सा एथिकल पॉइंट वहां दे सकते हैं. यू कैन क्रिएट सम एथिकल एस्पेक्ट्स एंड इट विल revolutionize your answer writing process. Clear? If you can do it, you can think of becoming even topper or ranker. So think of that. So need corruption है क्या, जो मैं कहने वाला था. I was just talking about how can we decide. So first of all, I am giving one definition of need corruption and greed corruption. और उसके बाद सबसे पहले हम समझेंगे नीड, डिजायर और ग्रीड में क्या रिलेशन है विद एग्जाम्पल्स. फिर से कहता हूं, प्रवचन से कल्याण नहीं होगा. इट इज नॉट प्रीचिंग दैट डू आर जॉब डन, गेट आर जॉब डन. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द प्रीचिंग्स. प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, उस तरह से क्रिएटिव तरीके से. सो प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट. स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? Smart practice. Swecha Mahajan has said, practice is what makes perfect. Yeah, smart practice. Clear? Okay. So first of all, we talk about कैसे डिफाइन करोगे आप नीड करप्शन को. आपको जब करप्शन की बात आएगी तो आपको डिफाइन करना ही है. अभी क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं. क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात आज ही हम करने वाले हैं. कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दे आर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट्स. मतलब 150 वर्ड्स की जगह पर दे आर यूजिंग 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स. एक भी मार्क 10 में से एक भी नंबर नहीं मिलेगा, right? Because if UPSC is asking you to limit your answer, to concise your answer within the word limit of 150, it means what? You can hardly exceed 5 or 6 words or even 10 words, or you can also use 10 or 8 fewer words than 150. बट ऐसा नहीं हो सकता कि 150 की जगह आपने 100 लिखा या 150 की जगह पर आपने 350 लिखा, 400 वर्ड्स लिखा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको. नॉट इवन अ सिंगल मार्क यू विल ऑब्टेन, राइट? So there are different kind of challenges. So when I come to, once I clear this concept of corruption, then I'll certainly talk about the brainstorming today. One question from 2023 हम डिस्कस करेंगे आज. उस पर क्या क्या दिक्कत आती है, what should be the process of brainstorming, और उसे हम कैसे लिमिट करें 150 वर्ड्स में. ठीक है? ओके. सो व्हाट इज नीड करप्शन? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस्ड. An unethical conduct in adversity. An unethical conduct in adversity. Also understand greed corruption. What is greed corruption? Greed corruption. What is greed corruption? It is an unethical conduct with power and authority. दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इसका दूसरा एस्पेक्ट जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. अगर हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करें, इफ आई कैन ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ नीड करप्शन एंड ग्रीड करप्शन, तो अगर हम वन लाइन की बात करें, नीड करप्शन क्या है? एन अनएथिकल कंडक्ट इन एडवर्सिटी. आपने सुना होगा कि लोग परेशानी में हैं, करप्शन करते हैं. दिस इज वेरी मच डीप रूटेड इन आवर फैमिलीज, इन आवर सोसाइटी. नया नया कोई आईएएस बना एंड ही इज ऑफ चैरिटेबल नेचर. उसका नेचर कैसा है? दूसरों की हेल्प करने वाला. ही इज फुल ऑफ एम्पैथी, ही इज फुल ऑफ कंपैशन. दया की भावना उसके अंदर भरी हुई है, राइट? ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स. He always helps others. So he has become an IAS out of adversity. आपने कई स्टोरी सुनी होंगी, कई बार स्टोरीज आपने सुनी होंगी
कि टू बिकम एन आईएएस उसकी फैमिली को सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, इतना रिस्क लिया उसने। एंड इफ ही वर नॉट सेलेक्टेड, देन इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू हिज फैमिली, राइट? सो पीपल, हमारे सोसाइटी के अंदर जब आप देखते हो कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत बहुत परेशान है, और दूसरों की हेल्प भी करता है, फिर भी वो करना चाहता है, तो हम उसके कुछ गलत काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वी एक्सेप्ट some of his unethical behavior. दिस इज नीड करप्शन, दिस इज डीप रूटेड इन आवर सोसाइटी। और हमारे सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोस में किसी लड़की की शादी होने वाली है, एंड देर आर मैनी गर्ल्स, देर आर मैनी फैमिलीज इन विच दे डोंट हैव मनी फॉर देयर डॉटर्स टू मैरी। शादी करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप बन गए ऑफिसर, एंड यू हैव स्टार्टेड हेल्पिंग देम। तो आपको लगता है कि आपको जो सैलरी मिलती है उससे आप हेल्प कर सकते हैं? कैन यू हेल्प सच काइंड ऑफ फैमिलीज विद द सैलरी यू गेट एवरी मंथ? नहीं कर सकते। फिर आपने क्या कहा? सिंस यू हैव अ ग्रेट एथिकल फैब्रिक, आप अंदर से बहुत नैतिक व्यक्ति हैं, एथिकल हैं, तो आपने क्या सोचा? चलो एक काम करते हैं। अच्छा, एथिकल नहीं है, मोरल है एक्चुअली। एथिकल होंगे तो आप गलती काम करोगे ही नहीं। सो यू हैव बेसिकली मेड सम वे आउट। आपने कुछ नए रास्ते निकाले पैसा कमाने का। क्या रास्ता हो सकता है? सी एग्जाम्पल, टेंडर प्रोसेसिंग। टेंडर निकलने वाला है, आपने किसी को टेंडर दिलवा दिया किसी भी चीज का, एनी पब्लिक वर्क्स, एंड ही हैज गिवन यू सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। आपने वहां भी इनजस्टिस नहीं किया, यू डिड नॉट डू एनी इनजस्टिस। मीन्स द पर्सन, you got the tender of some particular public work given। जिस आदमी को आपने एक पब्लिक वर्क का टेंडर दिलवाया, ही डिजर्व्स मीन्स वह एक अच्छा व्यक्ति है। He has certain arrangements to ensure the perfection of that particular work। ठीक है? Many questions are actually being asked here, so I'm not just many comments are actually coming before me, and I'm not reading them out because मुझे लगता है पहले ये कंसेप्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ कुछ। इट इज़ अ अल्ट्रुइस्टिक चीटिंग, यस ऑफ कोर्स। कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर ऑल्सो दिला दो और उसमें से 5%। हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ, समझिए इसको जरा। सो जिसको आपने टेंडर दिलवाया, he deserves he deserves and he has some such kind of arrangements to ensure the perfection of that particular work, the accomplishment of that particular public work, कि वो पब्लिक जो काम, उसका टेंडर आप दिलवा रहे हैं, उसको वो अच्छे से करेगा, ये गारंटी है। आप जानते हैं इस बात को, आप श्योर हैं, यू हैव एग्जामिन्ड। फिर भी जो आपने उसको टेंडर दिलवाया, उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड फेवरेटिज्म, राइट? दैट इज फेवरेटिज्म। आपने उसका फेवर किया, एंड ही हैज गिवन यू सर्टेन, बिकॉज वह एक लीगल प्रोसेस से नहीं आया। ही डिड नॉट एक्वायर दैट टेंडर थ्रू अ लीगल प्रोसीजर। सो he has been helped by you to get that particular tender। Against that he has given you some money, और उसने आपको बहुत सारे पैसे दिए। तो आपने इस तरह के रास्ते निकाल लिए, आपने इस तरह के रास्ते निकाल लिए जिससे कि आप पैसे कमा सकें, so that you can help the deprived, so that you can help the poor, so that you can help the families those are downtrodden, those are in adversity। Clear? So this is the corruption. An ethical conduct in adversity is called need corruption, and an unethical conduct with power and authority, ये बहुत एविडेंट है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज हैं। सीएजी, सीवीसी, सीबीआई, ईडी, पुलिस,
बहुत सारे हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं, राइट, जो इंश्योर करते हैं कि ये करप्शन, जो ग्रीड करप्शन है, इसको हम रोकेंगे। बट इसको कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये दिखता नहीं आसानी से, और सोसाइटी के अंदर लोग इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। बहुत सारे आपने सुने होंगे, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ गॉड फादर्स, दे हैव बीन इंडल्ज इन डिफरेंट काइंड ऑफ करप्शन। हमको मालूम है कि पैसा जो कमा रहा है, वो पैसा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है, चाहे टैक्स पे करने में। अगर आप टैक्स नहीं पे करते हैं टाइम पर, टैक्स चोरी करते हैं बहुत स्मार्ट तरीके से, बिकॉज यू हैव अ सिस्टम ऑफ सच पर्संस, तो ये भी तो करप्शन है। दिस इज ऑल्सो करप्शन। तो need corruption is an ethical conduct in adversity, and greed corruption is an ethical conduct with power and authority. Now if we talk about, अगर हम इसको और डिफाइन करें, अगर हम इसको और डिफाइन करें, तो हम कैसे इसके लिए हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल नीड, जस्ट अंडरस्टैंड थ्री कंसेप्ट: नीड, greed, need. See how. Let me show an the wants and requirements to survive. It is called need. Just pen down. The wants and requirements to survive is called need. Means you require something, you require something to fulfill, to survive. To survive, this is called need. Right? This is called need. So when you require something, when you require something, now we talk about what is basically desire. What is desire? When you wish something, now talk about desire. Desire. The extra wants and requirements. Requirements to survive. I'll give you examples also. First of all, just the extra wants and requirements to survive is called desire. Is called desire. The extra wants and requirements to survive is called desire. They are called desire. Then what is, so just comment here. Are you able to understand what I'm teaching? Are you able to understand, everyone? Right. First of all, I talked about the wants and requirements to survive, that is called need. The extra wants and requirements to survive, desire. I'll give you examples also, many examples. First of all, we just have to write the definition. And these definitions are not actually available anywhere. These are the definitions written by me for my students, right?
Just try to understand. And this paper is all about it. It's not about cramming some definitions written somewhere by somebody in something with reference to something else. तो ये जो पेपर है ना आपका, बेसिकली दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एबोरिजिनल एंड प्रिस्टाइन अप्रोच. अगर आप ये कर सकते हैं, यू कैन स्कोर मार्क्स मोर देन यू हैव एवर थॉट. किसी से कहिए ना कि 200 प्लस या 200 हम स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में, तो हंसेगा आप पे. समझ जाइए, ही इज द विक्टिम ऑफ such institutions or such process which has blocked him from all around, जिसने सोचने की एफिशिएंसी को जो है खत्म कर दिया है. बिकॉज द बर्ड्स नो हाउ टू फ्लाई. इफ यू आस्क आई वुड से कि एक जमीन पे चलने वाले एक एनिमल को आप पूछेंगे हाउ टू फ्लाई, कैन ही हैव एनी आंसर? Can it ever imagine? It can't imagine. So just I'm telling you, you must have very aboriginal, pristine, and I would say creative and realistic definition. So for that, I am holding this class. This is a class number 13. This is class number 13. And a lot of different kind of value, a lot of terms, and I would say that values and different kind of theories we have learned so far. Okay. So the extra wants and requirements to survive is called desire. Now, what is greed? What is greed? Greed is when the selfish and incessant desire is called greed. This is greed. Right? Or I would say, in place of incessant, you can also say excessive. The selfish and incessant desire, the selfish and incessant desire, or in place of incessant, incessant means what? Something which is not stopping. जो बिल्कुल कभी रुके नहीं, लगातार चलता जाए, उसे हम बोलते हैं incessant. जैसे पूरे रात भर बारिश हो रही है बिना रुके, क्या बोलेंगे उसको? incessant rain. So incessant desire means what? एक फोन आपको मिल गया, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक और फोन हो, वो आ गया, फिर आप सोचते हैं एक और महंगा फोन हो, इसको बेच देते हैं. दिस इज कॉल्ड incessant desire. एक घर पहले से ही है, हमें और घर चाहिए. incessant desire. और selfish desire. Clear? Or I would say excessive desire. So now I think, I'm sure you would have understood the definitions of need, desire, and greed. Have you understood? Have you understood? Just comment here. Have you understood or not? Right? Clear? Now I'm going for the next equation. The genuine need, then it becomes, after some time, desire. Desire turns into greed if extra desire, right? Extra need, I would say. This is extra need. Extra needs. Then I would say incessant desire. Incessant desire. Then
it becomes corruption. Right? Then, so when we have to stop, we have to have control here. When we talk about, whether we talk about society or we talk about institutions or we talk about any dimensions of society or our country, we have to stop here. Right? We must know before buying something, consuming something, taking something, doing something, that whether or not this is my actual demand, this is my actual requirement to survive. If it is my actual requirement to survive or to look after my family, that's okay. But the moment we start having extra needs, this becomes desire. Once it becomes desire, then you cannot control. You will have to control here. This is the point we have to control. If you want to control, if you want to curb corruption, if you want to stop corruption, in the beginning, we'll have to control here. We'll have to have control here. Otherwise, corruption cannot be eliminated. And you saw when I was making you go through many questions from previous years and questions framed by me. In most of the questions, once you understand this dimension, all questions will become the easiest thing for you to answer. Right? So we have to stop here. Otherwise, everything that we are discussing on corruption are just preachings, nothing else. That everybody knows. Everybody knows what is corruption. But you are civil service aspirants. So if UPSC is asking questions about corruption, then certainly it wants you to answer the way it actually is. Right? And the way it can actually seek some solution or provide some solutions to the problem. Okay? So everybody, is it okay to everyone if I'm speaking? Because I have been asked to use bilingual, both Hindi and English, but out of my habit, I'm just using English. So if anybody has problem, can ask me, then I'll, for today's session, only today's session, I'll also use some Hindi. Okay? I'm very much okay in Hindi since I give more classes in English. ज़्यादा क्लासेस मैं इंग्लिश में देता हूँ, इसलिए आदत है. ये पर्टिकुलर बैच जो है इंग्लिश मीडियम का है. अदरवाइज हिंदी मीडियम वाले बैच में मैं सिर्फ हिंदी बोलता हूँ. राइट? हिंदी मीडियम वाले बैच में मैं सिर्फ हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश वाले में सिर्फ इंग्लिश. जब पहले से पता हो बायलिंगुअल है, तो अभी क्या हुआ है कि 13, दिस इज द क्लास नंबर 13. तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं, तो वहाँ पे अपने आप नेचुरली इंग्लिश ही निकलती है, क्योंकि पहले से आदत पड़ी है इस बैच में. ओके, तो फिर भी किसी को दिक्कत हो तो पूछेंगे, बिकॉज टुडे सेशन इज बायलिंगुअल एक्चुअली, आई हैव बीन आस्क्ड. सो करप्शन अगर आपको रोकना है, इफ यू हैव टू स्टॉप करप्शन, यू विल हैव टू कंट्रोल हियर. Otherwise it's not possible for any organization, be it a religious organization or NGOs, right, or the government or any law enforcement body. आप कुछ कर लीजिए, रामायण सुनाइए, महाभारत सुनाइए, वेद सुनाइए, पुराण सुनाइए, कुरान पढ़ाइए, बाइबल सुनाइए, कुछ होने वाला नहीं है. Nothing is going to happen. So we have to have control here itself. That is why Gandhi ji said that for our need, the nature has everything. हर आदमी के नीड के लिए इस प्रकृति में सब कुछ है. राइट? इसलिए हमारे वेदों में क्या, संतोष परमम सुखम. राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संतोष? लोग सोचते हैं संतोष का मतलब यह है कि मैं बिल्कुल एक ही कपड़े पहनूंगा, मैं बिल्कुल ऐसा लाइफ जीऊंगा जो लाइफ ऑफ अ सेंट. नो, नॉट एट ऑल. Everybody must know his or her demand. Everybody
एवरीबडी मस्ट नो हिज और हर डिमांड, और उसके हिसाब से काम करिए। इफ आई एम अ ब्यूरोक्रेट, मुझे कार चाहिए, मैं अगर साइकिल से चलूंगा, सो दिस इज नथिंग बस फुलिशनेस, it will be it will be called foolishness. So if I am a civil servant, if I am an educator, even I'm telling you, and I have to give many classes, तो अगर मैं साइकिल से अगर यहाँ आऊंगा, ठीक है, आई केयर फॉर पोल्यूशन, तो मैं कितनी क्लासेस दूंगा? क्योंकि मैं तो साइकिल चलाने में थक जाऊंगा ना, आई विल बी टायर्ड साइकिलिंग। तो मेरा जो बड़ा पर्पस है टू टीच सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स सो दैट दे कैन सर्व द नेशन इन अ बेटर वे, कि देश की सेवा कर सकें बड़े लेवल पे, वो पूरा होगा नहीं होगा ना? तो नीड हमको पहचान, हमें कैसे सिखाया गया है? हम एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू डिकोड आर टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स। प्रवचन सुन लेते हैं, अंदर बात क्या है वो समझते नहीं, या समझाया नहीं जाता। मेन मेन तो कारण वो है, समझाया नहीं जाता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समझाते हैं। द सेम थिंग हैपन्स विद द एजुकेटर्स ऑफ यूपीएससी। वो क्या करते हैं, एंड पर्टिकुलरली इन दिस सब्जेक्ट, उनको लगता है कुछ फिलोसफर्स को हम पढ़ लेंगे, अरे, और जाके पढ़ा देंगे स्टूडेंट्स को, उनका काम हो जाएगा। इवन इफ यू टीच 500 फिलोसफर्स, और वो बहुत टाइम लगेगा, कोई गारंटी नहीं है कि आउट ऑफ 500 किसी फिलोसफर के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए। उसको एक तरह का एक मेथड है, देर इज अ मेथड ऑफ टीचिंग फिलोसफर्स इन एथिक्स। दिस इज नॉट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी, दिस इज नॉट अ फिलोसफी, कंप्लीट फिलोसफी। ये एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ मामला है, एंड यूपीएससी ने इसको इसमें रखा है, तो आपको समझना पड़ेगा डिमांड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ दिस पेपर। और हम बात कर रहे हैं यहाँ इस नीड की। तो नीड का मतलब ये, मैंने कहा कि नीड पे हमें वी हैव टू हैव कंट्रोल हियर। इट डज नॉट मीन कि सबको एक जैसा रहना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड रैशनली कि मैं एक, आप एक ब्यूरोक्रेट हैं तो आपको एक कार चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, एक आप अच्छा आपको लैपटॉप चाहिए, अच्छी आपको आसपास आपको सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, सो दैट यू कैन बेसिकली डू योर वर्क इन अ बेटर वे फॉर द फॉर द बेस्ट रिजल्ट फॉर द स्टेक होल्डर्स, फॉर द पीपल। ओके, सो द जेन्यून नीड कि आगे क्या आता है, व्हेन नीड्स आर एक्स्ट्रा, मीन्स व्हाट? अगर मैं, मेरे पास एक पेन है और इस पेन से मैं काम चल सकता है, फिर भी मैं एक नया पेन खरीद रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नीड। इफ आई कैन मैनेज विद दिस फोन, एंड इफ आई एम जस्ट गोइंग टू बाय अनदर फोन ओनली बिकॉज आई हैव मनी, ओनली बिकॉज आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, आसानी से खरीद सकता हूँ, तो मैं एक नया फोन खरीदूंगा, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नीड्स। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नीड्स, मतलब डिजायर। आप घर से खाना खा के निकले हैं, आप जाके पिज्जा खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खा लेते हैं, आप तो लंच करके निकले हैं ना, दिस इज कॉल्ड डिजायर, एक्स्ट्रा नीड्स। 4 रोटी से आपका पेट भर सकता है, लेकिन आप 7 रोटी खा गए हैं, दिस इज कॉल्ड डिजायर, एक्स्ट्रा नीड्स। क्योंकि अगर आपने 7 रोटी खाई है, 7 चपातीज खाई है इन प्लेस ऑफ 4 चपातीज, इट मीन्स यू मस्ट हैव डिप्राइव्ड somebody who is still hungry on this planet। एक जमाना था जब लोग बोलते थे कि हम पोल्यूशन यहाँ करेंगे तो इसका इफेक्ट ग्लोबली कैसे होगा। नाउ वी हैव कम टू नो कि अमेरिका में कोई व्यक्ति कार्बन एमिशन कर रहा है, कोई संस्था, कोई फैक्ट्री से कार्बन एमिशन हो रहा है, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट इन आर कंट्री सूनर और लेटर, बिकॉज वी आर लिविंग अंडर द सेम बायोम। तो ये बात हमको समझना है कि इफ आई कैन मैनेज विद ओनली वन फोन एंड आई एम बाइंग नेक्स्ट फोन एवरी आफ्टर 6 मंथ्स, कि हर 6 महीने में एक नया एडिशन आता है किसी फोन का, मुझे अच्छा लगा, पुराना बेचा, नया खरीदा, इसका मतलब है आई एम मिस यूजिंग मनी, एंड मनी इज नॉट योर्स। मनी इज नॉट टू फुलफिल, मनी, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये सारा डिस्कशन जो है इट विल हेल्प यू आंसर योर क्वेश्चंस इन डिफरेंट डायमेंशंस।
मनी अगर आपके पास है वो आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए है, आपको शौक को पूरा करने के लिए नहीं. व्हाट पीपल से, शौक पूरा करने के लिए. बिकॉज वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग मनी टू क्वेंच योर डिजायर, जैसे ही आपने पैसा खर्च करना शुरू किया अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप लालची बनेंगे ही. यू विल सर्टेनली गो फॉर द ग्रीड, यू विल बिकम ग्रीडी. क्योंकि वंस यू हैव डिजायर, वंस यू आर इन कंट्रोल ऑफ डिजायर, इन कंट्रोल ऑफ डिजायर, आपके अंदर ग्रीड आएगा ही. और जब ग्रीड आ गया तो भले ही आपको चांस नहीं मिल रहा है करप्शन करने का, वो अलग बात है. इन आवर कंट्री people are corrupt. Those say they are honest. Actually, are those people have no chance to do corruption. हमारे देश में भ्रष्ट जो हैं वो तो है ही. जो भ्रष्ट नहीं है और कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं those could not have had any chance to do corruption, जिन्हें करप्शन करने का मौका नहीं मिला. Actually, I am not getting comments. So अगर आपको आपको करप्शन अगर रोकना है, अगर आपको करप्शन रोकना है, सो करप्शन को आपको रोकने के लिए यहाँ काम करना होगा. यहाँ. क्लियर. Hemil has taken some name of somebody. I cannot take officially क्योंकि इन नामों से, इन नामों को आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं. अगर इन नामों को आप नहीं लिख सकते हैं तो उसको ऑफिशियली बोलने का कोई मतलब नहीं है. राइट. क्लियर. हेमिल. ओके. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द जेन्यू नीड. एक्स्ट्रा नीड्स becomes desire. Incessant desire becomes greed, and it will certainly indulge into corruption. It will certainly make you corrupt. It will certainly make us corrupt. So, or unethical practices. So, what kind of examples can we have? We need a house. We need a house. हमारे एक आदमी ने एक घर खरीदा. उसका पर्पस क्या है? घर खरीदा अपनी फैमिली के लिए. Everybody needs a house for his family or her family. The genuine need. अब उसके मन में क्या आया? एक बड़ा घर होना चाहिए. एक बड़ा घर हो, ऐसा घर हो जिसमें कि 2-3 रूम एक्स्ट्रा हो. राइट. 2-3 रूम एक्स्ट्रा हो. थोड़ा सा उसके जो अलग तरह के टाइल्स उसमें यूज किए गए हो, मार्बल्स यूज किया गया हो, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन यूज्ड, उसकी फिनिशिंग और अच्छी हो. दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नीड्स, डिजायर. आफ्टर सम टाइम, चलो वो हाउस भी आपने ले लिया. आई हैव वन हाउस इन दिल्ली, वन शुड बी इन बेंगलुरु. चलो बेंगलुरु में भी ले लिया. एक ऐसा करते हैं ना, एक अगर हो अ, अमृतसर में एक अगर घर हो तो कैसा रहे? हाउ इज दैट? इट्स अ गुड आइडिया. ओके, चलो वहां लेते हैं. फिर कहाँ लिया? एक चेन्नई में ले लो, फिर एक लखनऊ में ले लो. राइट. फिर एक पटना में भी ले लो. गेटिंग ना. फिर भोपाल, बड़ा अच्छा शहर, झीलों का शहर. अच्छा, भोपाल में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो उदयपुर में भी लेते हैं. तो जब दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिजायर, दिस इज कॉल्ड incessant desire, this is called selfish desire. Selfish desire, this is not investment. इसको ऑफिशियली, इसको करप्शन ही कहा जाता है. दिस इज ग्रीड. वाई? अगर आपके पास पैसा है, आपने उसे ब्लॉक किया, एक प्रॉपर्टी खरीद ली, कितने साल में प्रॉपर्टी बढ़ेगी? आपका उद्देश्य, योर पर्पस इज ओनली योर पर्पस. योर मनी इज नॉट योर मनी, योर मनी इज द मनी ऑफ दिस कंट्री. वंस प्रॉफिट इज समबडीज लॉस. ये आप कंसेप्ट हम जानते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कुछ नए स्टूडेंट्स हैं वो समझें. अगर आपने आज 1,000 रुपये कमाए और आपके बगल वाले व्यक्ति ने आज 100 ही रुपये कमाए, किसी ने 500 कमाया, इनइक्वलिटी है ना. तो आपने 1,000 रुपये कमाए, और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि यू हैव डन एमबीए. इफ समबडी हैज डन एमबीए, सो आर ऑल एमबीएज
Are all MBAs earning the same amount of money? They are not earning the same amount of money, right? It means you are fortunate to have a particular position in a particular company. तो एक पर्टिकुलर कंपनी में एक अच्छा पोजीशन आपको मिला, आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, सो वंस, इसका मतलब यह है कि आपको मौका मिला है, जो पैसा आपका है वो पैसा देश का पैसा है. सो यू मस्ट स्पेंड मनी ऑन योर नीड. वन शुड certainly spend money on one's need. नीड में क्या, सेविंग्स भी नीड का ही पार्ट है. सेविंग्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नीड. जो पैसा जमा करते हैं बैंक्स में वो भी उसका नीड है, बट और अल्टीमेटली बैंक्स भी इन्वेस्ट करती है पैसा, तो पैसा फ्लो में है. मनी क्रिएट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी. लेकिन आपने रियल स्टेट में आपने 10 घर खरीद लिए हैं, तो कितने समय के बाद बढ़ेगा और वो किसको बेनिफिट देगा? टू whom इट विल बेनिफिट? दोज आर ऑलरेडी होल्डर्स आर बिग नेम्स इन रियल स्टेट. सो सर्कुलेशन में उस तरह से नहीं है पैसा जैसा कि इन्वेस्ट करने पे होगा. सो इन्वेस्टिंग मनी, राइट, अगर आप करते हैं, पैसा बहुत है, इन्वेस्ट करिए एक लिमिट के बाद, अपने एक्सपेंसेस को चलाने के बाद. फिर डिजायर, आपने एक घर अच्छा हो गया, ठीक है, दैट्स इट. सो कंट्रोल हियर. सो नाउ वी हैव कम टू नो दैट एक ग्लास पानी, पानी सबको चाहिए, नीड, वी नीड वाटर फॉर सर्वाइवल. काश इस पानी के अंदर कुछ थोड़ा सा लेमन होता, थोड़ा सा अलग तरह का जूस होता है, इसमें मिला के हम पीते. डिजायर, राइट. लेकिन आप चाहते हैं अ, एक ग्लास नहीं, अब रोज मुझे एक ग्लास पानी ऐसा मिले, जूसी वाटर एवरी डे, वेन एवर आई वॉन्ट. इट्स अ ग्रीड. फिर उसके लिए लोग अधिक पैसा कमाना चाहते हैं. एक बात आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड टुडे, नाउ डेज इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ नाउ डेज पीपल. दे से people they say that we are earning more money than previous, than we when we used to earn, then we used to earn. फिर भी आज उतनी हैप्पीनेस नहीं है लाइफ में, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है. ये आप सुनते हैं ना, व्हाई इट हैपेंस? इट इज ऑल बिकॉज incessant incessant greed, incessant desire. ये जो incessant desire है, because of this, because of this such desires, ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्रीड में. जब ग्रीड में कन्वर्ट होगा तो आप कैसे हो जाएंगे? यू विल बी परप्लेक्स्ड. आप बेचैन हो जाएंगे कि यार इतने पैसे से काम चल नहीं रहा है. मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने है, जो कि अपने आप में बहुत है. इफ यू कंपेयर विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, 1 लाख रुपए महीने कमाना अच्छा इनकम है, फिर भी कम हो रहा है. आई एम नॉट एबल टू मैनेज विद इट. क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज यू आर अफ्लिक्टेड विद इंसेसेंट डिजायर. क्योंकि आप इंसेसेंट डिजायर के चंगुल में फंस गए हैं. सो इट विल मेक यू ग्रीडी. एंड वंस यू बिकम ग्रीडी, you will try to find some ways, whether legal or illegal, legal or illegal, to earn money. मैं बहुत सारे लोगों को, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, कि to fulfill their greed, they have started cheating their companies. दो कंपनीज के बीच में दे आर बेसिकली सेटलिंग द डील. और उस बीच में जो कमीशन है वो खा रहे हैं, किससे? अपनी कंपनी से. आई एम गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Many companies are in queue to have deal with your company that you are working in. उस कंपनी का डील आपने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को दिलाया और बीच का कमीशन आपने खाया. ऐसा क्यों खाना पड़ा? बिकॉज यू आर अफ्लिक्टेड विद incessant the mindset of incessant desire. And once you have incessant desire, extra desire, you are under greed. You will become greedy. Once you become greedy, आपके लिए ethics खत्म हो जाता है. You will start doing corruption. So I think you have understood, you must have understood the difference between need, desire, and greed. So now we are getting back. So just comment here if you have understood. Just comment here, gentlemen.
right? Okay, everyone. Now we talk about, so we have discussed four corruption so far: direct corruption, indirect corruption, need corruption, and greed corruption. Now we are talking about active corruption and passive corruption. Active corruption and passive corruption. Active corruption. Active corruption. Before knowing about active corruption and passive corruption, just have a look on one more comparison between food, water, air. Let me write it again. First, gold. Second, food. Third, water. Fourth, air. Human values. Right? We are comparing these things. We are comparing these things on the basis of, we are comparing these things on the price, value, and values. Right? So some people are, I think, new in this session. So I'm just telling you, what is the meaning of value? Value means importance. Importance and weightage of something. किसी चीज का महत्व, जैसे ये फोन मेरे पास है, इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, इसमें क्या है? मेरे लिए वैल्यू है। ये पेन मेरे पास है, इसके अंदर मेरे लिए क्या है? इसके अंदर मेरे लिए क्या है? वैल्यू है, वैल्यूज नहीं है। सो value is actually based on the uses, the utility of something. Clear? Utility of something. So value means importance, value means weightage. What is the meaning of values? Values are related to morals. वैल्यूज का संबंध है नैतिकता से, राइट? जैसे कि आप बोलते हैं फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, right? Individual values. So now I think you have understood. Okay. So if we compare, if we compare price on the basis of price, if we compare gold, food, water, air, and human values on the parameter of price, on the parameter of price, तो सबसे अधिक प्राइस किसका होगा? सबसे अधिक प्राइस होगा तो 1 2 3 4 5 है ना, तो आई गिव 5 चेक्स। सबसे अधिक प्राइस गोल्ड का होगा, इससे कम फूड का होगा, इससे कम पानी का होगा, इससे कम, इसका कोई प्राइस नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज आर प्राइसलेस, दे आर प्रेशियस। आप पैसे से, यू कैन नॉट बाई वैल्यूज फॉर मनी, राइट? हाउ? एंड नाउ वी टॉक अबाउट वैल्यू, इंपॉर्टेंस। if we talk about importance if we talk about importance, then importance, this is the most important thing in human life.
For the humans, we humans, our values are the most important thing. क्योंकि अगर हमारे हमारे लाइफ में वैल्यूज नहीं होंगी तो हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, खाना है, सब कुछ है, बट वी कैन नॉट हैव अ गुड लाइफ, वी कैन नॉट हैव अ कंटेंटेड लाइफ, वी कैन नॉट हैव एन एग्जाम्पलरी लाइफ, वी कांट हैव सेटिस्फैक्शन, वी कैन नॉट हैव हैप्पीनेस. एवरीथिंग विल बी टेम्पररी एंड वी विल सर्टेनली कोलैप्स टुडे और टुमारो. आज या कल हम फिनिश हो जाएंगे अगर हमारे पास वैल्यूज नहीं है. तो वैल्यूज आर ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इससे कम इंपॉर्टेंट क्या है ये? क्यों? वाई? पानी के विदाउट वाटर, पहले मैं चेक कर दूं उसके बाद बात करते हैं. 3, 2, सी. When we talked about the price, then the price of gold, the gold is more expensive than water, food, air, and human values have no price. You cannot buy human values for any price. That we are going to America or somewhere and we are going to buy some values to our country. Possible है? Possible नहीं है. लेकिन वैल्यू की हम बात करते हैं जिसमें मतलब है इंपॉर्टेंस, वेटेज, महत्व. सो ह्यूमन वैल्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हमारे जो वैल्यूज हैं लाइफ में, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, फोर्थराइटनेस, प्रॉबिटी, सेंस ऑफ करेज, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, करेज, सेंस ऑफ कन्विक्शन, कमिटमेंट, परसिवेरेंस, डिसिप्लिन, somebody has spent sympathy, empathy, compassion. ये जो वैल्यूज हैं ह्यूमंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं. दे आर द पिलर्स ऑन विच द होल ह्यूमैनिटी इज स्टैंडिंग टॉल एंड विल कीप ऑन स्टैंडिंग. तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. उससे कम इंपॉर्टेंट एयर. क्यों? गोल्ड अगर आपके पास नहीं है तब भी आप पूरा जीवन सर्वाइव कर सकते हैं. इफ somebody has no gold, if you don't have, if you have not worn any, if you have not put on any ornament, अगर आपने कोई ornament नहीं पहना हुआ है, कोई लॉकेट, कोई चेन, कुछ भी सोने का, you can live your life happily. बिना गोल्ड के भी आप, गोल्ड कोई जरूरी नहीं लाइफ जीने के लिए. if we don't have gold, we can still have a better life, a life full of satisfaction and happiness. लेकिन अगर खाना नहीं होगा तो खाने के बिना आप, तो गोल्ड नहीं भी चलेगा. किसी के लाइफ में पूरा पूरा लाइफ अगर उसके पास गोल्ड नहीं है, ही विल मैनेज, ही विल सर्वाइव. लेकिन फूड के बिना 4 दिन 5 दिन, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 1 महीने तक बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद तो कुछ खाना पड़ेगा उनको, अदर देन लिक्विड. तो फूड चाहिए उनको. तो गोल्ड से अधिक इंपॉर्टेंट हमारे लिए फूड है. फूड से अधिक इंपॉर्टेंट वाटर है. फूड के बिना आप 1 महीने रह सकते हैं. यू कैन बी अलाइव विदाउट फूड फॉर 1 month. बट विदाउट वाटर, आई एम टॉकिंग इन जनरल, विदाउट वाटर 2 days, 3 days, 4 days, but not 1 month. So water is more important than food. Food is more important for humans than gold or diamonds. Water is more important than food, and air is more important than water. क्योंकि without water you can survive for some days, but without air, without oxygen, we cannot survive even for some hours, some minutes even, I'm telling you. And without human values, अगर आपके पास सब कुछ है, you have everything, but you don't have human values, so as a human we will collapse, we will be finished. Okay, अब आइए वैल्यूज की अगर हम, if we talk about values, then gold has no values, food has no values, water has no values, air has no values,
Only human values have values, right? Clear? Just have a look on it, and then we'll go for defining other types of corruption. So, are you preparing such these charts or not? Everyone, Swechha, Yash, everybody, whosoever is watching this session, are you preparing this chart or not? Pavitra said yes. Ankit, Sneh, Sania, everybody, yes. So, I have already guided you how to prepare class notes. So, when we are talking about corruption, we have talked about need, desire, greed. We talked about price, value, values. We talked about four types of corruption. Now we are heading towards discussing two last types of corruption, two types of corruption more. So, what is that? Active corruption. Okay. So, just talk about active corruption. What is active corruption? First, we discuss about active corruption. So in active corruption, we are discussing 3 points. Excuse me. People are asking about break. So actually, if I give you a break this time today, actually I'm not willing to give you a break. At one go, I want to finish this concept, right? And so it's better for you. Clear? Today's session is of its kind that we have to continue. So 3 points, right? 3 points. The first point is ignorance. Ignorance to wait for a while. Ignorance to unethical necessity. Ignorance to unethical necessity. First, just pen down, then I'll explain you everything. It's very, these are very, very interesting concepts, right? Adherence to unethical means. Adherence to unethical means and acceptance of unethical ends. Unethical ends means results. Unethical ends. So what are these corruption? What is active corruption? Right. So what is active corruption? Ignorance to unethical necessity. The moment, the moment, the moment we start giving preference, the moment we start ignoring unethical necessity. Suppose in our family, a person has become an IAS and he is my brother or somebody.
and he is actually indulging in some unethical necessity. मैं पहले समझा चुका हूं. Unethical necessity means unethical needs. जो नीड, मेरे पास एक फोन है, फिर भी मुझे दूसरा फोन चाहिए, हर 6 महीने में एक नया फोन चाहिए. मेरे पास एक ऑलरेडी कार है, और इफ आई नीड इट, कि मेरी फैमिली अब बड़ी हो गई, नाउ आई हैव अ जॉइंट फैमिली, सो आई नीड अ बिग कार और आई नीड 2 cars. So it's okay. It is ethical needs. But since I have a lot of money, or since it's my habit that I want to have a bigger car, कि 1 साल मैंने पहले कार खरीदा है, मुझे एक और कार चाहिए, एक बड़ी कार चाहिए. इसलिए नहीं कि मुझे जरूरत है, नॉट बिकॉज आई नीड इट, बट बिकॉज आई हैव टू शो इट, और आई हैव टू एंजॉय इट. सो वी हैव टू स्टॉप सच पर्सन्स. हम क्या करते हैं, वी जस्ट इग्नोर. आप देखोगे फैमिलीज के अंदर लोग क्या कहते हैं, अरे पैसे कमा रहा है ना, तो ऐश कर रहा है, तो बुरा क्या है. पैसे कमा रहा है, वही पैसे कमा रहा है ना, तो अगर वो ऐश कर रहा है, तो भाई ऐश करना ही गलत है. व्हाट डू यू मीन ऑफ ऐश? व्हाट डू यू मीन ऑफ लिविंग अ लेविश लाइफ? इंग्लिश में उसको हम क्या कहेंगे, लेविश लाइफ. ये लेविश लाइफ का मतलब क्या है? इफ आई कैन फीड माई स्टमक विद द फूड ऑफ 200 rupees, is it use spending 2000 rupees for that? If I'm doing so, if I'm doing so, I am certainly becoming a part of corruption. जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पोल्यूशन करते हैं, इट विल ऑल्सो अफेक्ट अमेरिका टुडे और टुमारो. If people are indulging in some such kind of practices, तो उसका अफेक्ट आज न कल बाकी जगहों पे होगा, in other part of the world. So in the same manner, if we are ignorant to unethical necessities, it will certainly cause corruption. It's a part of, ultimately after some time, वो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे कैसे होगा, सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ adherence to unethical means, पहला समझ में आ गया आप लोगों को? इफ यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट वन, जस्ट कमेंट यस. So are you enjoying the concept or not? You are the only persons whosoever watching this video, and this video is not only for the students, even for the teachers, those are teaching students for civil service examination. Because corruption is not something that you are defining the way it is written in some book. That corruption is known to even a school going student. That corruption, that corruption, that corruption that corruption is known to everybody. So if corruption is an issue on which questions are asked in civil service examination, you must be able to understand the dimension, this dimension. Only then you can answer all kind of questions. So that's why I'm not giving you a break, because it's very important session, like everyday session. So once I complete the whole aspects of corruption, then we will certainly go for the brainstorming process of answer writing. Clear? And then I'll certainly give you some model answers, if not today, but tomorrow. Lekhraj Singh has asked something, but I could not understand what he's saying. So if you can elaborate it properly so that I can understand and respond to you. Okay, fine. So first is ignorance to unethical necessity. Second is adherence to unethical means. Adherence to unethical means. So the first was we are ignorant at unethical necessity. Second, I need a house. Somebody needs a house. He desperately needs a house. It doesn't mean he will try to buy a house for his family by doing corruption, or by taking, or by getting some bribes.
It doesn't mean even if you are in desperate need of a house, you cannot buy a particular house through an illicit means by taking money from somebody, by taking some kickbacks from some business houses. I'll answer the question of Jaspreet, not this time because then we'll be distracted. It is corruption. For now, I'll tell you, it is also active corruption. Clear? So adherence to unethical means. If somebody needs food, it doesn't mean every time he will steal food from different shops. Give me example. There are some families in which girls to be married, but they don't have money. It does not mean that you will become a Robin Hood and go and loot the rich persons and help them marry their daughters. आपके आसपास में कुछ फैमिलीज हैं जिनकी लड़कियां शादी के लायक हैं, पैसे नहीं शादी करने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके लूट लेंगे अमीर लोगों को और उन्हें देंगे कि आप शादी करो अपने बच्चियों की. राइट, दिस इज, सो वही मैं कह रहा हूं, एडहेरेंस टू अनएथिकल मीन्स even if your need is genuine, भले ही आपकी जरूरत वास्तविक है, फिर भी आप उसे प्राप्त करने के लिए you should not adhere to unethical means. Right? The third one, acceptance of unethical ends. Acceptance of unethical ends. How? Bribery. इसको छोड़ते हैं, डिस्कस कर चुके हैं. डाउरी प्रॉब्लम. आखिर डाउरी प्रॉब्लम बना कैसे? इन सोसाइटी पीपल हैव एक्सेप्टेड इट. सोसाइटी के अंदर जो करप्शन है वो है कैसे? आपके पास, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू गिव मनी टू योर सिस्टर और डॉटर, बट इट हैज बिकम अ सिस्टम, ट्रेडिशन, कि आपको अगर बेटी की शादी करना है तो पैसा देना ही होगा. और भली हमारे लिए एंटी डाउरी एक्ट्स बहुत सारे हैं, सब कुछ है, डाउरी इज लीगल है मांगना, फिर भी क्या आपको लगता है डाउरी हैज स्टॉप्ड? इट्स ever growing, never lasting. It's going. And people have explored different ways to get dowry. Right? They are basically asking the families of the girls, क्या कि शादी हम डाउरी नहीं लेंगे, बट शादी एक 7 स्टार होटल में होना चाहिए या 5 स्टार में तो होना ही चाहिए, हमारे गेस्ट आएंगे, उनका स्टेटस भी है कुछ. राइट? इट हैपन्स. It becomes more costly, more expensive. So this is acceptance of unethical ends. उसका रिजल्ट क्या होगा? एंड्स मीन्स रिजल्ट. आपने डाउरी दे दी, आप पैसा, आपके पास बहुत सारा पैसा है, और आपने डाउरी तो नहीं दिया सीधा सीधा क्योंकि इलीगल है मान लीजिए, और नोटिस में आ जाएगा प्रशासन के, तो उसमें आपको आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई कंप्लेन कर सकता है. तो अलग अलग तरीके से आपने पैसे खर्च किए, गिफ्ट के रूप में, बाद में दे दिया, शादी के बाद दिया, लोगों को मालूम चला, इट हैज बिकम अ it has come into a tradition. So acceptance of unethical ends. So agar if we have to oppose corruption, if we have to eliminate corruption society, since in 2023 the question was about that absence of core values in society is the cause of corruption. So we have to oppose all these three things. So when you are answering the questions, how can we eliminate corruption from the root of our society? So we have to say, we will have to, we will have to be, will not, we have to stop ignoring, we have to stop being ignorant to unethical necessity. We have to stop adhering to unethical means. We have to stop accepting unethical ends. So if we stop these three things,
then we can we can be sure that we can now finish corruption from society. So this, the corruption I have discussed, it's deep rooted in our society. This active corruption that I am discussing, it is deep rooted in our society. Deep rooted. Clear? Now we talk about passive corruption. Last, passive corruption. What is passive corruption? Preference of price to value. Second, preference of value to values. Right? I have already discussed what is price, what is value, what is values. So preference of price to value and preference of value to values means if we give more value, more importance to things based on price. Again, listen to me. If we give more importance to things which are more expensive, right, then it will cause corruption. For example, I'm telling you, starting from our society, since society, if society is pure, we will certainly have pure nation, the most powerful nation. And how can we make our society clean and pure? By working on each and every family. And how can we have a good family? To improve and to mend the ways of every individual, right? Because every individual, every person is the unit of a family. Every family is a unit of a society. Every society is the basis of any country. So we need to have such kind of society, such kind of persons to eliminate all kind of ills, all kind of bad things from society. It's not only about corruption. तो होता क्या है, मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटी की, मैं क्या क्या कहते हैं, व्हाट इज पैसिव करप्शन? हम किसको देते हैं प्रेफरेंस? जिसका प्राइस ज्यादा है। अभी हम एजुकेशन की बात करें तो आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग इम्प्रेस्ड कि इस वीडियो का व्यू इतना है, इसका मतलब कुछ अच्छी बात इसके अंदर होगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, फैकल्टीज हैं जो बेसिकली आई वुड से दैट दे आर नॉट that much popular, but they are the genuine faculties for civil service examination, right? But हम किससे impressed होते हैं? हमने किसका नाम सुना? People come from Delhi, come to Delhi from different places, और आगे क्या करते हैं? Which are the noted coachings? So they give importance to price, और वहां उनको ज्यादा पैसा भी पे करना होता है। कोई सस्ते में आपको पढ़ाता है तो आपको ये लगेगा कि मोस्ट इट्स अ कॉमन फिनोमिनन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पीपल, कि अरे इसके अंदर स्किल्स नहीं होगा इसीलिए सस्ते में पढ़ा रहा है। इस कोचिंग की फी है 3 लाख रुपीज और 2.5 lakhs, इसका मतलब कुछ जरूर अच्छा होगा। सो इट्स बीन आर नेचर, इट हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर ह्यूमन नेचर कि हम लोग प्राइस को वी गिव इंपॉर्टेंस टू आर प्राइस। हम अभी की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट हैज ऑलवेज बीन हैपनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग नाउ एंड व्हाई मोर प्रॉब्लम्स आर अकरिंग इन आर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो आप देखिए, एक वन मोर एग्जांपल आई शुड गिव। व्हेन अ फादर wants to, or going to is going to find a
ग्रूम फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखने के लिए जाता है, क्या देखता है? व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही वांट्स, कितना कमाता है। इन 99.99% केसेस ये पहला क्वेश्चन होता है, कितना कमाता है, जॉब भी नहीं, जॉब भी नहीं, कितना कमाता है, राइट। सेकंड, व्हाट अबाउट असेट्स, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, व्हाट अबाउट दैट? So ultimately, they are giving importance. They are starting the relation with the preference of, they are starting the relation, they want to start the relation with the with by giving importance, by giving importance to price more than value, more than value. कुछ अच्छे जो लोग होते हैं वो वैल्यू को इंपॉर्टेंट देते हैं, फैमिली कितनी बड़ी है, ये सब कुछ है, वैल्यूज पे सबसे लास्ट में आते हैं, एंड दैट इज वाई they have different kind of problems, or they don't have that problem. India has to face problems because if you are setting a marriage between two, I would say, different characters, people of two different characters, people of two different characters, आपको लगता है कि जो फ्यूचर जनरेशन होगी that will be sound, that will not be that sound, because ultimately marriage is the process to develop our society in all the aspects, right? So this is the problem of, this is called passive corruption, called passive corruption. So we have discussed six types of corruption. The definition, we started with the definition of corruption. Then we discussed about six types of corruption. Then we discussed about difference between price, values, need, desire, and greed. Now, if we talk about what are the measures, to be applied, right? So I have already said that for measures to eliminate corruption, then for type 1 and type 2, we have discussed. For type 1, what are type 1? We have discussed. In type 1, we discussed about need corruption, passive corruption, and indirect corruption, right? Indirect corruption. So for this, no is evident. But for that, we have, in type 2, we have active corruption, greed corruption, and and active corruption, greed corruption, and I would say that direct corruption, right? So in type 2, we have different law enforcement bodies. So for direct corruption, for greed corruption, and for active corruption, we have law enforcement bodies. And for corruption type 1, that is need corruption, and indirect corruption and passive corruption, we have no solution. We have no solution. So the question, most of the questions has been asked. Most of the questions have been asked on this. So now, what are the solutions to these this type of corruption? So if you can write
if we go for the brainstorming, first of all, right? If we go for the brainstorming, then we'll have, now see, right? Just have a look on this question. So till now, I have discussed about the definition of corruption, 6 types of corruption. There are still 3 more types of corruption that I will discuss with you in further classes. First of all, we have to understand, once we have understood 6 types of corruption, I hope you have understood in a much, much better way, right? Now you have understood the actual meaning of corruption, types of corruption, the reason of corruption through different kind of examples of values, value, price, need, desire, greed. Now, just have some brainstorming and exact. This is exact what happens in examination. This is the question. This question is from 2023. The question is, corruption is the manifestation of the failure of core values in the society. In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values in the society? This question, along with all other questions that I have shown you earlier, once you go through all the questions after this session, the PDF I'll share you to the group, and you will come to know that these questions are now easily accessible to you. And your perception, your idea would have completely been changed, right? Completely changed. So when we do brainstorming and this question, we have to write in 150 words. 150 words for 10 marks. For 10 marks. So what happens if I ask you, just give me some keywords from this question? Because without brainstorming, if you start writing the answer, you will certainly have some problem in between. Right? After writing some points, you will suddenly come to know that you have taken some wrong path while answering this question. तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें क्या क्या पूछा गया है? What are the key points? मतलब इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? Yes, anyone? Just comment here. देखो, let me tell you. The first point is corruption itself. Second is core values in society. Third, it is taking your opinion from this point. See, now it talks about measures. It means if we make a mind map, failure of core values in the society, it has caused corruption. Now, it talks about what measures can be adopted, right, to uplift the
to uplift the core values in society. So main topic is corruption. The topic is problem is corruption. And this question itself has given us the reason of corruption. According to this question, what is the reason of corruption? The failure of core values in the society. करप्शन का कारण क्या है? आपको ढूंढना ही आप यू डोंट हैव टू गो फॉर सर्चिंग द रीजन ऑफ करप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. यस, जब आपने ये सारे करप्शंस के बारे में पढ़ लिया, 6 टाइप्स ऑफ करप्शन alongside different kind of discussions, a lot of discussions we have had, उसमें आप कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे so that you can give a unique touch to this answer. Getting what I'm saying? लेकिन primarily जो कॉज ऑफ करप्शन है इस क्वेश्चन में दिया गया है, राइट क्या दिया देखिए, फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी. और पूछा क्या है आपसे, एक क्वेश्चन पूछा है सिर्फ, क्या? What measures can be adopted according to you? In your opinion. In your opinion. So you simply have to focus on. अब देखो मार्क्स कैसे कटेगा, मार्क्स कैसे, स्कोर कैसे नहीं आता है, पहले उसको समझते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग में अगर प्रॉब्लम है और वाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग यू आर टेकिंग मोर टाइम, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय ज़्यादा टाइम लेते हैं तो यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? यू विल हैव लेस टाइम टू राइट योर आंसर, पहली चीज. दूसरा, मैंने कहा कि जो वर्ड लिमिट आप एक्सीड करते हो ना, वर्ड लिमिट, अभी मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि 150 वर्ड्स में आपको लिखना है फॉर 10 मार्क्स, एंड आपने आंसर अच्छा लिखा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने यूज किया 300 वर्ड्स और 400 वर्ड्स, क्योंकि मैं बहुत सारी कॉपीज को इवेलुएट करता हूँ व्हेन आई डू मेंटोरशिप ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स. तो मैं देखता हूँ कि द कॉमन प्रॉब्लम इज व्हाट, जो अच्छा, कॉमन प्रॉब्लम विद गुड स्टूडेंट्स, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं. दोज आर गुड स्टूडेंट्स इन GS 1, 2, 3 एंड ऑप्शनल्स. व्हाट मिस्टेक्स दे आर डूइंग इन GS 4th पेपर एंड देन इन ऐसे पेपर, क्या गलती होती है और गलती क्यों होती है? क्योंकि इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. दिस पेपर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आइडियाज, multi-dimensional ideas. There's no limit for you to go. You can go to any limit while answering your question. और वही दिक्कत होती है, right? So this is a very hot potato. This question is a burning issue. करप्शन हम सब जानते हैं, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग सही टाइम पर इन प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम जब करते हैं तो क्या पूछा, सबसे पहले देखो क्या क्या कीवर्ड्स हैं. पहला कीवर्ड है इसके, ये सेंटर में क्या है, इशू क्या है? इशू है करप्शन. दिस टॉपिक इज अबाउट करप्शन. सो दिस टॉपिक इज नॉट आस्किंग अबाउट, सी वेरी वेरी सीरियसली, दिस टॉपिक इज एक्चुअली अबाउट द इशू ऑफ करप्शन. दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट द इशू ऑफ करप्शन. बट फिर भी आपको करप्शन के बारे में बहुत बात नहीं करना है. अगर आप करना चाहते हो तो अलग तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं, हाउ कैन आई डिफाइन ऑल द 6 टाइप्स ऑफ करप्शन दैट सर हैज टोल्ड अस, जो मैंने आपको पढ़ाया है. आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत यूनिक बात आपको पढ़ाई है मैंने. नोबडी नोज, नोबडी नोज, नोबडी नोज दीज 6 टाइप्स ऑफ करप्शन. तो ये जो करप्शन मैंने आपको पढ़ाया है, ये किसी तरह से जब भी कोई क्वेश्चन, वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट करप्शन, तो आपको तरीका निकालना है कि एनी हाउ, किसी भी तरह से, without using many words, I have to illustrate, I have to write the names of these 6 types of corruption. Right? ये दिमाग लगाना है किसी तरह से. You have to just play smart. You have to do smart. But this topic has given us the cause. इसने कहा cause हम जानते हैं. Cause क्या है?
इस क्वेश्चन ने आपसे पहले कहा, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी स्टेटेड द कॉज, इट इज द फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन सोसाइटी। ठीक है, अब प्रॉब्लम फिर से क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है, सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस आंसर को लिखा है, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कोर वैल्यूज इन डेप्थ, they start talking about the core values in depth. So just answer me, is this question about core values? Is this question about core values? No, it is about actually corruption. This question is about corruption, but you have a limit to describe corruption. This question has given you, this question has given you the cause of corruption. That is the lapse of core values in society. This question is actually asking you the main point that this question the UPSC wants to know from you, to tell the measures to improve the core values in society so that the menace of corruption, the problem of corruption can be eliminated. The problem of corruption can be eliminated. So have you understood the brainstorming of this question and how we do? Everyone. Sneha Garg is asking something. We can go with defining corruption, and your comment has gone up again. Write your comment again, Sneha. Right. Everybody saying all clear except one. Sneha Garg, I think. Yes. Again, corruption, and then a little description that we have type 1 and type 2 corruption and have legal measures of solving type 2, but the corruption is deeply rooted in our society. Yes, see, exactly. So once we have understood what this question is about, this question is about corruption. Question itself has given us the cause behind corruption, the failure of core values in society. इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो भ्रष्टाचार के बारे में है, करप्शन के बारे में है। क्वेश्चन ने हमसे अपने आप कहा है कि करप्शन का जो रीजन है वो है द फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन सोसाइटी। तो अगर हमने कोर वैल्यूज को समझाना शुरू कर दिया, वी विल एक्सीड द वर्ड लिमिट। अगर हमने करप्शन को बहुत ज्यादा समझाना शुरू कर दिया, वी विल एक्सीड द वर्ड लिमिट। एट द सेम टाइम, वी विल लैक आंसरिंग व्हाट इज आस्क्ड। पूछा क्या है, क्या तरीका है, व्हाट आर द मेजर्स, what are the measures to eliminate the regions of the failure of core values। आप कोई उपाय बताइए जिसके द्वारा हम उन रीजन्स को फिनिश करें जिससे सोसाइटी में कोर वैल्यूज फेल हो रहा है। ठीक है, कोर वैल्यूज के फेलियर के पीछे क्या कारण है, ये नहीं पूछा है। पूछा है कि इसको हम फिनिश कैसे करेंगे। तो ट्रैप कहां पर है कि सपोज यू हैव स्टार्टेड आंसरिंग द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज प्राइमरली, तो आप वहां ज्यादा वर्ड आप खर्च करेंगे। तो करना क्या है, अपना फोकस आंसर का इस पे रखना है, एंड वाइल कीपिंग योर फोकस ऑन आंसरिंग दिस एस्पेक्ट, आपको ग्रेजुअली करप्शन का टाइप 1, करप्शन का टाइप 2, उसको किसी तरह से इंट्रोड्यूस करना है स्मार्टली। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। This is called the expertise in answer writing. At the same time, जो मैंने कहा था कोर वैल्यूज क्या है भाई, मुझे ही बताइए, जो प्रॉब्लम है वही रेमेडी है ना। अगर जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना छाते के बाहर जाता, विदाउट एम्ब्रेला गोज आउट, भीग जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, एब्सेंस ऑफ एम्ब्रेला, वही सोल्यूशन है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट इज द कॉज विल बी द रेमेडी। जो कॉज है वही रेमेडी है, जो कॉज है वही रेमेडी है। तो कॉज, जब आप
Question is asking about the remedy. Question is asking about the remedies. Suggest the measures to be adopted in your opinion so that we can stop this. Once we improve this, we can stop corruption. तो ये जो प्रॉब्लम है वही रेमेडी है. तो प्रॉब्लम्स क्या क्या बताया था आपको मैंने, याद करो. when while describing need corruption, greed corruption, active corruption, passive corruption, direct corruption, indirect corruption, क्या कहा था? What I said? Preference of price to value and value to values. फिर adherence to unethical means, acceptance of unethical ends, and ignorance of unethical needs. Getting? So these are the factors we have discussed, that need, desire. तो ये brainstorming में आपको यहाँ पे हम आए. Now I'm showing you some points for brainstorming, and then I'll give you final answer, not today, because we won't have time. See, ना, अब चूंकि now see how to uplift core values in society. How to uplift core values in society. And now see how many things I have just given. The first point I have written here, education and awareness. And in this is the first point, second point, third point. First point is inclusion of ethics in academic curriculum. The second is community workshops and interactions on ethics and values. Third, public awareness campaigns and on ethical values. Now, if the question is of only 150 words, if question demands to write in 150 words, we should not use these things. We should not write these things, only one line. First, we have to put the headlines. This one, how to uplift or measures to uplift core values in society. Then the first point, education and awareness, in which we have sublines, inclusion of ethics in academic curriculum. Second, community workshops and interactions on ethics and values. The third one, public awareness campaigns on ethical values. Clear? If the question demands, though the question of section A demands only 150 words in the examination, except 1 or 2 years in the beginning, in 2013 and 14, except those years, every year questions from section A demands only 150 words to be written. सिर्फ 150 words में लिखने का होता है, right? तो हमने सिर्फ इसको लिखा. Now we go further. Second point, individual development, in which we have penned down self-reflection and growth. Second, mentorship programs. We don't pen down this. We don't pen down this. Third, ethical decision-making training. Right? I will share this PDF to you. So don't be in haste, right? Don't be hasty. I'll share this PDF. So if the question demands, for example, 250 words, then we can elaborate these points and write this. Now, family and community. Writing in these different segments in classified way is very impressive. It leaves a good impression, right? See, questions must be in more than one paragraph, first of all. Second, if we can classify our answers in such points, separate points, it looks better, right? And also, one day I'll tell you how to use mind maps and flowcharts. Nowadays, everybody talks about mind maps and flowcharts like a fashion. No,
It's not a fashion. If there's a demand, you can use some flowcharts and mind maps. Okay. So in this, the first point, second point, third point, don't pen down this. The first point is running family programs on values. Second, improving community engagement. Third, volunteering opportunities. So these are 3 points, 3 things I'm telling you first. When we talk about improving core values in society, so first of all, we talk about education and awareness, in which we have 3 points. Then we talked about individual development, in which we have 3 points. Then we talked about family and community, in which we also have 3 points. And now if we talk about now cultural and social norms, in which just 3 points. The first one is promoting positive cultural practices, discouraging negative behaviors, recognizing individuals and organizations publicly for upholding core values in society. Now, can we also use these things? This question is about how can we improve core values? How can we improve core values in our society so that we can stop the menace of corruption? हम सोसाइटी के अंदर कोर वैल्यूज को कैसे इंप्रूव करें जिससे कि करप्शन खत्म हो। तो हमने सोसाइटी को डिस्कस करने के लिए, सोसाइटी में कोर वैल्यूज को बेहतर करने के लिए वी हैव डिस्कस्ड मैनी पॉइंट्स। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फैमिली एंड कम्युनिटी, वी डिस्कस्ड अबाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट, वी डिस्कस्ड अबाउट education and awareness. So education and awareness, individual development, family and community, cultural and social norms. जब आप इसको डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, राइट? क्योंकि कल्चर की बात करो, इंडिविजुअल लेवल की बात करें, सोसाइटी की बात करें, इनका रिलेशन किससे है? कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। बट हम जब यहाँ आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इट लुक्स बेटर, ये देखने में अच्छा लग रहा है, बट डोंट राइट एनी ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम हेयर टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट। सो इसको नहीं लिखना है। नाउ सी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इसको भी नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको लिखोगे आप दो गलती करेंगे। पहला, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। पहला, you are going away from the demand of the question, and second, you will certainly use more words. तो आपने कितना भी अच्छा लिखा है, अगर आपने 300 वर्ड्स यूज किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, राइट? फिर देखो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल, यस वी कैन डिस्कस दिस, वी कैन, बिकॉज so economy is something which is an integral part of everything. Without economy there's nothing. Clear? So economy is the integral part of each and everything. तो हमें इसको डिस्कस करना होगा। That we discussed about need corruption, greed corruption. Are you getting what I'm saying? Yeah. So you can use this. So what we have used in it? Equitable distribution of resources. Don't pen down this, just pen down this line only. Support for vulnerable groups. This one. Don't pen down this. Then encouraging corporate social responsibility. We can discuss this, right? Not this, but only this point. And now, don't use this to answer this question. So now I think, I feel that, yeah, you have to comment here. Are you able to understand? Have you been able to understand the concept of corruption? Have you been able to understand the brainstorming process? Have you been able to understand how we exceed the word limit? Have you been able to understand how we have to be on the demand of the question? So if you have understood, please comment here, and the model answer of this question we'll discuss tomorrow. Okay. So I hope you would have enjoyed this session very much, like always. And in next classes, in tomorrow's class, we'll discuss about the
we'll resume the case study section we adjourned in the previous class, right? So the point we left on Saturday, from where we'll start on tomorrow, discussing about case study questions. And the this question, answer of this question will also have, I'll give you the model answer. And all these, the PDF of everything that I have just shown here on PPT, you will have the PDF by the evening today on the app of Sambhavam IAS. So whosoever are preparing for mains must be serious. And if you have any kind of question, you must talk to the call center of our Sambhavam IAS. Meanwhile, I, Abhimanyu Shridhar, if somebody asks you what's the name of your sir, you always say Abhimanyu Shridhar. My full name is Abhimanyu Shridhar Jha. So I, Abhimanyu Shridhar, thank you very much. Sneha, some other questions are there, so we'll discuss tomorrow in the session, because we have already had enough. We have already have more than 2.5 hours, and today I have to go for some other classes also getting. So that's all for now. Thank you very much. Have a nice day.